this topic of chemical properties of benzene. This is a very important topic. As you know, you might have seen कि last years में बहुत सारे questions इस topic से पूछे गए हैं. And also, apart from being important, this is a very vast topic in terms of mechanism, types of reaction, because benzene has many substitution compounds like phenol, NEET, nitrobenzene. So we'll learn all of these step by step. Okay. So first, we all know what benzene is. Benzene is this. Okay. Now this benzene ring shows mainly three types of reaction. This is addition reaction. In this, we'll learn some 3 or 4 reactions. Then second is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. And in the third category, we'll probably touch few miscellaneous reactions. Okay, miscellaneous reactions. Miscellaneous reactions means oxidation. Although benzene, the oxidation उतना easy नहीं होता, it restricts itself from oxidation. Then we'll learn about reduction and few other reactions. Okay. So under these categories, we will try to go through in this topic. So let's discuss addition reactions. Okay. So in addition reactions, we have to see what type of addition reactions can benzene exhibit. Okay. So first is addition reactions. Addition reactions. Now we know that benzene have a double bond. Okay. So if we do like free radical addition type of mechanism, this double bond can be broken into a single bond. So into this category, we learn mainly 3 main reactions of benzene. Okay. So we'll go step by step. So first reaction is addition of halogen. This is also a very important reaction. Addition of halogens. Okay. Now थोड़ा confusing होता है. कई बार लोग देखोगे कि बेंजीन में एडिशन होता है जब, तो कभी इस तरह का कंपाउंड बनता है Cl हेलोजन जब जोड़ते हैं Cl2 हम लोगों ने 3 मोल्स लिया, ठीक है, Hb की प्रेजेंस में. और कभी we have also seen this type of reaction कि Cl2 in presence of FeCl3. In this, what happens? Substitution happens. Double bond is not broken and substitution happens. So first understand why this is happening. Okay. So this mechanism, this particular mechanism is free radical mechanism, free radical addition mechanism. Okay. This is free radical addition. Okay. And this is basically substitution. This is basically substitution and electrophilic substitution. Electrophilic substitution. Okay. So we don't have to confuse between these two reactions. This is different. This is sort of addition. This is substitution. Okay. In this reaction, double bond is not is as it is. Okay. So let's discuss this addition reaction first. Addition of halogens. Now guys, when we do addition of halogens, as I have told you, this is a free radical. Means there will be homolytic fusion if I am taking chlorine. Okay, this chlorine molecule. So what will happen here? The bond fusion will take place by homolytic fusion, like in this way. Okay, so radicals are generated. Okay, this radicals. Why these radicals are generated? Because in free radical mechanism we have learned in presence of sunlight or ultraviolet rays or in presence of heat,
these radicals can be generated easily. Okay. So in this reaction, and also when we take benzene here, these bonds are broken like this, so it will become this radical, and this homolytic basically bond fission will occur. Okay, I am trying to keep my language in English because most of the viewers now may belong to South or some Northeast, so I'll switch between these two languages. Anyways, so this type of mechanism will happen. So if we generalize one reaction, it will be like this. If we add benzene, okay, if we add chlorine, suppose chlorine, in presence of HV. HV means ultraviolet rays, porcelain light, and temperature is also very high because radicals are generated in very high temperature. So high temperature we can write. Now what will happen is we get these kinds of product. Okay. We get these kinds of product. The bonds will be broken and we will get this. This is a very important compound, guys. This is 666 hexene, or we call it bromoxene, and we also call it linden. It was used as a pesticide. It kills white ants. This is a very important compound. So this happens when we add chlorine into it. Okay. Now, if you ask, can we add fluorine by this mechanism? So we can. But generally we don't prefer those reactions with fluorine. Okay. Why? Because fluorine is very reactive. See, in case of fluorine, if you go through the addition mechanism of fluorine, if I add fluorine molecule, what will happen is, first of all, it is very difficult to break fluorine molecule into fluorine radicals. You know, fluorine, like the bond is very strong between fluorine because of its small size. So first of all, we have to give a tremendous amount of energy, tremendous amount of heat. Okay, but if we use few catalysts and in controlled environment, what will happen? Like this metal catalyst of COF3, cobalt trichloride is used, and what happens here is a substituted fluorine can be formed. Okay, substituted fluorine can be formed, but the condition is the environment should be controlled. Okay, but here if you see, I am drawing this 666 fluorohexene, okay, fluorocyclohexene. Now here there is H also, okay, 11H. It was present earlier, okay. But now what will happen? Fluorine will substitute H also from this place, and it will be like something like this. So we don't get this kind of product with fluorine. Okay, and this is also done in a very controlled method. Otherwise, what will happen? There is one more reaction with fluorine. If you add fluorine here, okay, in this HV or high temperature, what will happen here is, it will, fluorine, you know, fluorine is very one of the most oxidizing property. So what it will do is, it will oxidize the benzene ring and it will form 6HF, okay, and the carbon molecules, these carbon molecules, 6 carbon will get, and there will be tremendous amount of heat, okay, tremendous amount of heat, and it will be very explosive reaction, very explosive. So we don't prefer this reaction. This carbon, this HF form,
will create a very exothermic reaction, and this carbon will burn in that heat produced. Okay, so we don't prefer the reactions with fluorine. So in this halogenation, what we generally add is we can add chlorine, we can add bromine, and we can add what? Iodine. Okay, these three molecules we can add easily. Now, if you have to, if this questions, if someone asks what will be the reactivity order of chlorine, bromine, or iodine? So reactivity order, you know, this in free radical mechanism also, it is based on the principle of bond formation and bond breaking. Okay, with chlorine molecule, when chlorine molecule is added here, chlorine atom is added here, the bond formation is very exothermic. The whole process is very exothermic. Okay, in bromination, the process is little bit of exothermic, मतलब थोड़ा सा उतना ज़्यादा heat नहीं निकलेगा. But in case of iodine, you might have to give heat. Okay, so the reaction will become endothermic kind of reaction. So the reactivity order in this case will be chlorine, bromine, and iodine. Okay, so this is more or less the first reaction, halogenation of benzene. We'll move on to some other reactions. Now the third type of addition reaction, which is also a very important one, is addition of hydrogen. Okay, so this is third type of addition reaction. Here what we do is, this is addition of hydrogen. Okay, in this reaction, this is performed in a very high pressure. Okay, because I've said earlier when we started this lecture, benzene resembles more of a saturated hydrocarbon in terms of chemical reactivity. Okay, because of its aromatic stability. Now, if we add hydrogen, okay, तुम लोग सोचोगे कि यार डबल बॉन्ड तो टूट के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बट इतना इजी नहीं होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन बेंजीन. द जो एरोमेटिक स्टेबिलिटी होती है, इसलिए एडिशन रिएक्शंस इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू ऐड इन दिस मैनर. सो विल टेक वन बेंजीन मॉलिक्यूल, okay, and we'll add hydrogen here. Now, obviously we have to add 3 moles of hydrogen, and here the important thing is not only the temperature. Temperature is approximately 100 to 200 degrees centigrade, not very high, but the pressure is very high. Okay, the pressure makes this addition possible. Otherwise, if we heat benzene in presence of hydrogen, no addition will take place. But this pressure, because benzene, when we heat benzene, benzene का भी vapor बन जाएगा, तो ये भी vapor बन जाएगा. These two gases will react. Okay. So what will happen is here is we get product like this. These double bonds are broken, and we are getting cyclohexane. Okay, out of benzene. So and here also we have to write this happens in the presence of hydrogen interstitial hydrides. Okay, this is also physical addition. You might have heard about this platinum, nickel, platinum, palladium. These catalysts, platinum, palladium are very costly, so we'll go with nickel. But this catalyst, you might have. These catalysts have this property of forming interstitial hydrides. Okay, these are hydrogen atoms, okay, absorbed on the surface of catalyst. If this is a nickel, and this is hydrogen. This is absorbed, okay, on the surface. So what will happen here is this is a when we add benzene here, the syn addition will take place. Okay. Because this is a sort of physical addition. There is no chemical mechanism as such. Okay. So we'll get cyclohexane out of benzene. Okay, let's move on to the
very important topic here, which is electrophilic substitution reaction of benzene. Okay, this is like proper reaction वाला mechanism और ये सब कुछ इसमें होगा, मजा आएगा. So apart from these three addition reactions, we have to learn about this electrophilic substitution reaction. Okay. So electrophilic substitution is also very wide topic in a sense. It takes generally 2 lectures, but I'll try to sum up it in as short as possible because this is a video. Electrophilic substitution. Okay. Under this category, we have to understand basically types of electrophile, how types of electrophiles are being added to benzene ring. Okay. First of all, let's understand why this reaction takes place. If I say this is a benzene ring, okay. So there are loose pi bonds here. Okay. So benzene itself acts as a nucleophile. Okay. Because there is a bit of electron density here. Okay. Loosely bound pi electrons. So these pi electrons are donated to electrophile, and electrophile get added, and then when electrophile get added, electrophile carries a charge of plus. So intermediate benzenium ion will be formed, and we'll go through the whole mechanism, and then in the third step, one H plus ion has to be removed from benzene to gain the stability. Okay. So we'll go through this reaction step by step. First of all, let's do this addition of electrophilic substitution of Cl2, Bi2 and I2. Okay, this is electrophilic substitution of Cl2, Bi2, I2. Here we can, how we can make this electrophile? We can make this electrophile either by using FeCl3, okay, or AlCl3. These are all, this should be in anhydrous condition. Okay, यदि हम लोग इसको गीला लेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में लेंगे, तो अपनी एसिडिटी लूज कर देगा ना, OH आयन को पहले ले लेगा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाएगा. तो ये एनहाइड्रस होना चाहिए, FeCl3, AlCl3. Even we can take BF3 because there is a vacant p orbital here. We take BCl3 either, we can take ZnCl2 and this type of chlorides. Okay, but this is generally preferred. Okay, AlCl3, because aluminum has vacant d orbital and aluminum cation is very small in size, so the complex formation is relatively easier. So we get maximum yield when we get maximum 95% of our desired product when we use AlCl3. Okay, so let's write this reaction step by step. It has a mechanism also. So first of all, let's write our main general reaction. What will happen? So if this is a benzene ring and I add, suppose, chlorine, what will happen here is it will give me a product like this. Chlorine will be added here, and one hydrogen which was already present will be removed. So basically substitution is happening. Okay, this is not an addition, only substitution is happening. Now, and here we are just generally heating this in presence of AlCl3. Okay, now if we have to write the mechanism here, it follows 3 steps. Number 1 is generation of electrophile. Okay, electrophile क्या होता है? Electrophile is a species which is electron deficient. So there can be neutral species also electron deficient, but generally cations are quite more electron deficient. So this is the electrophile. Okay, now generation of electrophiles. जनरेट कैसे होता है इलेक्ट्रोफाइल? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना. देखो
हमारे पास है Cl2, okay, and I have taken this AlCl3. Now what will happen? Aluminium, okay, aluminium has vacant. Aluminium is the, if we write the electronic configuration of aluminium, it is 3s2 and 3p1. Okay, in ground state. In excited state, this electron will jump from here. Okay, and when aluminium will form compound like AlCl3, or it will pair 3 electrons, unpaired electrons of chlorine, okay, and form a compound like this. This is sp2 hybridized trigonal planar. Okay. Now you can see here aluminium has this vacant orbital. Okay. This is what? 3p orbital. And also aluminium has 3d subshell, which is completely empty. So what aluminium does here is it breaks chlorine ion. Okay. It breaks chlorine into this. Heterolytic fission happens here. So Cl plus and Cl negative. Okay. This negative charge, it is carrying 2 electrons. एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन. Okay. So this negative charge. So basically there is a one lone pair of electrons. Now what happens here is AlCl3 is acidic. It accepts this lone pair of electron of chlorine here, and it will form something like this. Cl positive plus AlCl4 negative. Okay. Now this species will be tetrahedral in shape. Obviously hybridization भी change हुआ है यहाँ पर 4 bonds, and now we have this electrophile with us. Okay. So the first step is generation of electrophile. Okay. Now let's go to the next step quickly. This is a very big topic, but I am trying to summarize it as short as possible. Okay. So the second step is mechanism is attack of electrophile. Okay. Attack of electrophile. Okay. In the first step, when we get likhna, it is a very fast process. Okay. जो AlCl3 है, वो Cl2 से relatively जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, फास्ट प्रोसेस होती है. But this attack of electrophile, in 99% of cases, this is a slow process, except with my NO2. Okay. This is a slow process. So what will happen here is, let's go through the steps one by one. Okay. So we have this benzene with us. This double bond will be broken in a heterolytic manner. Okay, and we'll get this. First of all, we'll get this molecule. We can write positive. Actually, it is not positive and negative. It is delta positive and delta negative. But to understand it, here I am writing positive and negative. Okay. Now we already have electrophile here, which is what? Cl positive. Now this electrophile will attack on which place? Obviously electrophile को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये अटैक करेगा वहाँ पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है. So it will attack on this place and we'll get this. These 2 bonds will be like this, and we get chlorine here, and positive negative barabar, or and this positive charge. Okay. Obviously there are hydrogens here. We would have to write hydrogen here. If you want, you can write. Okay. There is one hydrogen here, and there is one hydrogen here. Now, in the next step, as I have written here, this is a slow process. In the next step, what happens is this cation will exhibit resonance with this molecule. Okay, because this cation, and then we have sigma bond, and then we have pi bond. So it is a conjugation of cation
सिग्मा एंड पाई। तो रेजोनेंस हो सकता है इसमें, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे होगा इसके, लेट्स ड्रॉ फ्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस केटायन विल अट्रैक्ट पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड तो मजबूत है, टूटेगा नहीं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट of molecule will be. Okay. This is Cl. This bond is there, and out of resonance, this bond will be broken, and bond breaking, bond formation. So, what will happen here is, यहाँ पर double bond बन जाएगा, यहाँ पर positive charge आ जाएगा. Okay. In the next step, what will happen is this. ये डबल बॉन्ड टूटेगा इधर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ फ्लोरीन एंड सो देखो यार यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज delocalized, okay, and we are getting a hybrid structure of this part, a hybrid structure of this kind. Chlorine is here, okay, and this positive charge is traveling from this position, okay, to this position. So this is resonance hybrid, and we call it benzene और आजकल की लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। ओके, दिस इज वेरी स्टेबल। ओके, नाउ यार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता तो एक एनायन भी बन सकता बेंजीन का, बट जनरली यार एनायन बनता नहीं है इतना इजीली। या एनायन जो होते हैं, कार्बन एनायन जनरली लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना, एज कंपेयर्ड टू कार्बोकेटायन, बिकॉज कार्बन इज ऑलरेडी वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इजीली, लेने में इसको प्रॉब्लम है, कार्बन एनायन बहुत कम देखे जाते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ये बनता है ना, तो दिस इज द स्लो प्रोसेस। देन let's move on to the third step, which is release of H plus ion. Now what will happen here is, because this is unstable, okay, relatively unstable, so now what will happen is यहाँ से कहीं से एक पॉजिटिव चार्ज को जाना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को जाएगा, तो कौन पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा भाई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, H plus बन के चले जाएगा, तो थर्ड स्टेप में we'll write release of H plus. So in the mechanism, the third step is release of H plus ion. It's like this. It is also a fast process, okay, but as I said, in case of nitrobenzene, वो जो fast और slow process है उसमें kinetic थोड़ा thermodynamic factors होते हैं, तो थोड़ा कुछ exception है। Anyway, तो third step here is release of H plus ion. Okay, so हम लोगों के पास इस तरह का एक बेंजीनियम आयन तो था ना, इस तरह का एक बेंजीनियम आयन था, इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये चार्ज सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो है नहीं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिलेटिवली स्टेबल होता है केटायन का। तो यहाँ से क्या होगा, रिलीज ऑफ H plus आयन, मतलब एक H plus आयन रिमूव होगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर था क्लोरीन, हम लोगों को मिलेगा कुछ इस तरह से, क्लोरीन यहाँ पे है, ठीक है, एक H plus जाएगा तो वापस से जो हमारे डबल बॉन्ड्स थे वापस बन जाएंगे, फिर डबल बॉन्ड तो थे ही ना, एक दो इधर था, यहाँ केटायन था, सपोज करो यहाँ से H plus चलेगा, कहीं से भी चलेगा, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल। Okay, this is also relatively fast process. So rate determining step is second, attack of electrophile.
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्यों बोलते हैं हम लोग सेकंड को? तो जनरली जो स्लो स्टेप होती है उसको साइंटिस्ट या केमिस्ट उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट स्टेप तो बहुत जल्दी होगी, इन माइक्रो सेकेंड और भी ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उसको हम लोग पढ़ ही नहीं सकते ना, उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कब कंपाउंड बना नहीं बना एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। जो स्लो प्रोसेस होगी उसमें हम लोग कंपाउंड मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आइसोटोप इफेक्ट से, अलग अलग इफेक्ट से, ठीक है। सो दिस इज अ थर्ड स्टेप। सो मैकेनिज्म इज डन। सो फाइनली वी गॉट hydrogen atom substituted from the benzene ring, and we got this reaction plus Ca2 in presence of AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस क्यों होना चाहिए बताया, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में ये जो मॉलिक्यूल है अपनी एसिडिटी को लूज कर देगा, OH आयन पहले से एक्सेप्ट कर लेगा, तो इससे Cl नेगेटिव आयन को क्यों एक्सेप्ट करेगा, तो this will get H प्लस गया और Cl जुड़ा, और H प्लस जो गया उसमें Cl नेगेटिव जो AlCl4 नेगेटिव था वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, H प्लस उस Cl के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और HCl वापस बना लेता है, उसको भी समझना होगा यार, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इस AlCl3 Cl के पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन थी, बोरोड इलेक्ट्रॉन थे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से दिया, H प्लस आया, H प्लस ने इसके लोन पे अटैक किए, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या बन गया AlCl3 प्लस HCl, ओके, HCl। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, है ना। सिमिलर वे में होगा नाइट्रेशन, सिमिलर वे में होगा सल्फोनेशन, सिमिलर वही जो इसके अपना कार्बोकेटायन बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से इन केस ऑफ सल्फोनेशन क्या होगा, SO3H जुड़ जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, सिग्मा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इन केस ऑफ नाइट्रेशन भी सेम होगा, एक ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ जुड़ जाएगा NO2 कैसे जुड़ता है, NO2 पॉजिटिव के रूप में, है ना, इलेक्ट्रोफाइल है ये कैसे जुड़ता है, SO3H ओलियम से बनाते हैं, ये H2SO4 से नहीं बनाना है, H2SO4 से सल्फेट आयन जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये कैसा होता है SO3H पॉजिटिव, ये अटैक करता है, इसमें NO2 अटैक करता है। तो थोड़ा सा क्विकली हम लोग इसका सल्फोनेशन और नाइट्रेशन भी देख लेते हैं, फिर इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, उस पर भी आएंगे। ओके, सो इन केस ऑफ नाइट्रेशन, ओके, सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले तो समझते हैं यार जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ इस केस में, है ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पहले हम लोग ये समझते। देखो यार, इसमें हम लोग लेते हैं HNO3, ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग H2SO4 के साथ, और H2SO4 ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है, 2 मोल्स लेते हैं इसके H2SO4, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, देखो यार, HNO3 टूटता है यहाँ पर OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव, ऐसा टूटता है, ठीक है। ये टूटता है कैसा, H प्लस और SO4 नेगेटिव, ठीक है, एक और H प्लस देगा ये और बना लेगा ऐसा H प्लस और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर ये जो H प्लस ये है, ये बनाएगा H3O, मतलब हमको मिला यहाँ पर NO2 पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। और इसको यदि हम लोग बैलेंस करें, एक्चुअली यहाँ पर मैंने 2 मोल्स लिखा है, ठीक है, ये 1 मोल के साथ किया, इसको 2 मोल्स लिखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये बनेगा कुछ ऐसा HSO4 नेगेटिव H3। मैंने अभी इसी H2SO4 के एक ही एटम से 2 H प्लस निकाला, एक्चुअली H2SO4 में से भी क्या होगा यार, एक H प्लस निकालना आसान होता है, दूसरा H प्लस उतना इजीली नहीं निकलता है, बहुत देर में निकलता है, काइनेटिक फैक्टर। तो 2 मोल्स लेंगे तो ऐसा होगा, HSO4 नेगेटिव के हमको 2 मोल्स मिलेंगे, 1 मोल ऑफ ये, सो दिस विल बी द बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, सो
हम लोगों को मिला दिस NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोग देख चुके हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग अभी जस्ट देखा हम लोगों ने किस तरह से अटैक होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको अटैक कर रहे हैं। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, इसमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर NO2 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, जैसा क्लोरीनेशन में हुआ था बिल्कुल वैसा होगा। दिस इज NO2, we can write H here for understanding, and यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो दिस इज पॉजिटिव। रेजोनेंस होगा और हम लोगों को तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। आई एम जस्ट राइटिंग द हाइब्रिड हियर, NO2 and this sigma complex, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव। Now क्या होगा, in third step I am writing here only, in third step H plus ion रिलीज होगा और मिलेगा हमको ये माइनस नाइट्रोबेंजीन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह लेते हैं 100-150 डिग्री के लगभग, ठीक है। इन द सिमिलर वे सल्फोनेशन विल टेक प्लेस। सल्फोनेशन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं इसमें H2SO4 प्लस SO3, इसको हम लोग ओलियम बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे फ्यूम निकलते रहती है। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे कैसा होता है, S डबल बॉन्ड O H, S डबल बॉन्ड O, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसमें ऐड हो जाती है कुछ इस तरह का, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, देखो कहीं से भी तुम लोग तोड़ के इसको इलेक्ट्रोफाइल बना लो। मान लो मैंने इधर तोड़ा, ये जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगी, तो ये बनेगी कैसी, S डबल बॉन्ड O, हाँ, OH और पॉजिटिव, हम लोगों को क्या मिला, और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोगों को मिला क्या, दिस इलेक्ट्रोफाइल SO3H पॉजिटिव। ओके, तो सल्फोनेशन के केस में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग समझ चुके, ये हुआ ओलियम से, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बना। अब ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में वही स्टेप्स पूरी फॉलो होगी, है ना, और बड़े इजीली फॉलो होती है। SO3H यहाँ पर जुड़ जाएगा किससे, बेंजीन से। ये था अपना बेंजीन मॉलिक्यूल H2SO4, और यहाँ से जब H प्लस जाएगा तो H प्लस किसके साथ, इसके साथ बना लेगा, तो प्लस H2SO4। यदि हम लोगों ने इसकी ओलियम के साथ रिएक्शन बिल्कुल हिट दी और बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इस तरह से हम लोगों को इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो these are the three reactions of electrophilic substitution. There is one more reaction which is rather more important than these three reactions. उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, Friedel craft reaction. Let's go through that reaction also. So the third reaction is what? Electrophilic substitution हो रहा है, but this reaction was observed long time back by Friedel and Kraft, two chemists. Okay, I don't know they were chemists or physicists or what, क्योंकि पहले के ज़माने में सब कुछ सब मिक्स होता था, केमिस्ट लोग फिलोसोफर भी होते थे, फिजिसिस्ट भी होते थे, ऐसा। तो केमिस्ट्री बहुत नया है। तो 1875 के लगभग इन लोगों ने रिएक्शन दी है, ठीक है, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें आप देखो होता क्या है, हियर दिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और इसमें हम लोग बेसिकली दो चीजें करते हैं। ओके, either we'll do alkylation or we'll do acylation. Now understand this. Okay, in case of alkylation, alkyl group will be added. Okay, तो alkyl group कैसे बन सकते हैं, यार देखो इस तरह से बन सकते हैं,
मैंने यदि CH3X लिया, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन वगैरह, तो इसमें हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होगा और ये क्या बनाएगा, इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ये बना इसका न्यूक्लियोफाइल। और किस तरह से हो सकता है, द अदर थिंग वी कैन टेक दिस आल्सो, OH, ये बनाएगा सेम CH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। So the reaction would be like this. We'll add CH3X here. Okay, it could be CH3OH also. It could be alkene also. Alkene का भी देखेंगे इसके बाद. Now, what will be the reaction? We'll take AlCl3 for best heat. Okay, heat करेंगे हम लोग और ये एल्यूमिनियम AlCl3 इस X नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर सकता है इस तरह से। तो वही स्टेप होगा यार, पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म वगैरह हम लोग देख चुके हैं पिछले उसमें। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल जो था CH3 ये छू जाएगा और H+ निकलेगा और H+ इस X के साथ बना लेगा HX। यदि अल्कोहल लेंगे हम लोग, if we take alcohol we will get water molecule H+ OH negative। ठीक है, ऐसा। तो यार this is a very general reaction। Let's move on to the acylation part as well। But इसमें ये तो बहुत बेसिक है, इसमें काफी सारी चीजें होती है यार। इसमें यदि कोई यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, सपोज यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूट है O नेगेटिव, हाँ, या फिर मेरे पास है OH, तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास NH2 है इसकी जगह एनिलीन, तो क्या होगा, एक्चुअली अल्कोहल, फिनॉल और एनिलीन तो रिएक्शन ही नहीं देते। ये फिनॉल और एनिलीन जो है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पे ये खुद ही AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो एनिलीन नहीं देता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसे ही फिनॉल भी नहीं देता है, फिनॉल भी नहीं देता है। फिनॉल ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पहले ही है भाई, किसी के लोन पेयर पे एसिड अटैक करेगा ना, इसके लोन पेयर को तो तोड़ना पड़ेगा, बाद में अटैक करेगा। ठीक है, तो फिनॉल एनिलीन नहीं देते हैं। बट इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। मान लो मेरे पास CH3 ग्रुप है, तो इसका प्लस H इफेक्ट होता है। प्लस H इफेक्ट से कहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा नेगेटिव जनरेट होता है, ऐसा। तो इसमें फ्रीडेल क्राफ्ट यदि होगा टाउलिन के केस में, मैं ये ऐड करूंगा, ठीक है, इस तरह से कुछ भी, मुझे क्या मिलेगा, या मैं टाउलिन के केस में ब्रोमीन ऐड करता हूँ, ठीक है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, Br+ और Br नेगेटिव। Br नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ब्रोमीन कहाँ ऐड हो सकता है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और मिलेगा क्या मुझे, एक HBr। ठीक है, एक जनरली जैसे ब्रोमिनेशन भी हो सकता है फ्रीडेल क्राफ्ट मैकेनिज्म से ही। ठीक है, पर उसको हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं। मैकेनिज्म कुछ सेम नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म ही फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म है ना। एक्चुअली फ्रीडेल क्राफ्ट ने जब रिएक्शन की थी तब तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, हम लोगों को तब तक एटम का साइज भी, एटम का शेप भी नहीं पता था इन 1875। ठीक है, तो ये सब फिजिकल ऑब्जर्वेशन से था, बाद में हम लोगों ने मैकेनिज्म वगैरह देखा। तो इस तरह से ब्रोमीन जुड़ जाता है इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाना भूल गया था मैं। और इसमें भी यार मेजर प्रोडक्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यदि ये बल्कि है, ऑर्थो पोजीशन पे यदि बल्कि है, ब्रोमीन तो बल्कि है, ब्रोमीन बड़ा होता है, तो हमको ये प्रोडक्ट थोड़ा कम मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड, हम लोग को ऑर्थो वाला ज्यादा मिलेगा। इन केस ऑफ क्लोरिनेशन तो तीनों मिल जाएंगे, ठीक है, बट इस तरह से हम लोगों को इसके काफी सारे रिएक्शंस करना है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग, एसाइलेशन। Acylation. So, in case of acylation, what happens here is, acylation में we take these type of acid halides, acetyl chloride। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, कुछ इस तरह से Cl नेगेटिव जो कि AlCl3 के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उनको मिलेगा एक इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरह का एसाइलिनियम आयन, ये मिलेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पर, अभी हम लोगों ने CH3 को जोड़ा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन के साथ। मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, या कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट,
और हम लोगों को मिलेगा कुछ इस तरह से। थोड़ा शॉर्ट में जल्दी में बता रहा हूँ मैं, बिकॉज वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये जुड़ेगा C+ इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड O और CH। हम लोगों को एरोमेटिक कीटोन्स मिल गए। बेसिकली मेथड ऑफ कीटोन की प्रॉपर्टी में ये रिएक्शन आती है, बहुत रिपीट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधी से ज़्यादा रिएक्शन। ये तुमने आधे चैप्टर में इजीली पढ़ लिए हैं, तो आधे चैप्टर तुमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वही रिएक्शन रिपीट होती है। 6-7 तो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के, अल्कोहल है ना, एल्डिहाइड, एल्काइल हैलाइड और कार्बोक्साइल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, ठीक है, अमाइंस। तो ये हमको कीटोन मिल जाता है ना। अच्छा, एक चीज इधर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो यहाँ पर ये जो केटायन है ये रेजोनेंस से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है, बट जब हम लोगों ने एल्काइलेशन किया था तो हमारा केटायन बना था ये, ठीक है। मान लो मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, ऐसा, मतलब ये क्या है 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। क्लोरोब्यूटेन में क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ केटायन बनेगा और यहाँ बनेगा एनायन। अब ये जो केटायन है 1 डिग्री केटायन है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, 2 डिग्री बन जाएगा, 1 डिग्री से बनेगा 2 डिग्री, ठीक है, चाहे यहाँ करो यहाँ करो एक ही बात है। तो हम लोग इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ केटायन को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, इसको मत ऐड करना, इसको ऐड होगा, है ना। जैसे इन केस ऑफ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपना एनसीईआरटी में भी है, मान लो मैंने CH3 CH2 CH2 और Cl लिया है, ओके, तो इसमें इसकी मैंने बेंजीन के साथ रिएक्शन की है इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्वियसली AlCl3 एंड हीट किया है, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ये आइसोप्रोपाइल CH3, और मुझे कुछ बच्चे ये क्या करते हैं, प्रोपाइल बेंजीन, ये नहीं मिलता है, आइसोप्रोपाइल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो केटायन था यहाँ पर ये स्टेबिलिटी गेन करता है और 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाता है ना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक।